हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। चलो हम आज पार्ट 3 विल सी पार्ट 3 ऑफ रियल नंबर्स। आगे का जो भी किया था आप सबने रिवाइज किया होगा। लेट्स सी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसका पार्ट 3। आज डिस्कशन करने वाले हैं हम एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम के बेस के ऊपर। एक या दो मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। व्हाट इट फॉर्मूला सेज, फॉर्मूला क्या कह रही है कि LCM and HCF. Suppose you have any two numbers, that is A and B, or any X and Y. आपके पास अगर दो नंबर है, so multiply the LCM and HCF of that number, LCM and HCF. Find the LCM HCF of both these numbers, multiply them together, and whenever you will find the result will be product of two numbers. मतलब वो दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, सो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो कितना होगा, उनके LCM एंड HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। लेट्स हैव एग्जांपल के थ्रू हम अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। नाउ सी सपोज वी आर टेकिंग एनी टू नंबर 12 एंड 20। इजी एक कंसेप्ट के लिए हम दो नंबर लेते, दैट इज 12 एंड 20। I will say A is equal to 12 and B is equal to 20. I am multiplying that both this number A into B. They will be 12 into 20. The result is 240. That is our RHS. RHS is 240. Please check it, 240. Now see, we are going to take their LCM HCF. Already we have seen prime factorization. It is 12. 12 is nothing but 2 square into 3 power 1. अब ऐसे ही आ जाना चाहिए उसको, 2 square into 3 power 1. Okay, 4 3s. Now what is the second number? The second number is 20. 20 is nothing but it is 2 power 2 into 5 power 1. Now see, we are going to take HCF. Now in HCF we are taking common numbers, so we have only two common, no 3 no 5. Now what is smallest power? See here both the numbers are having same power. अब सेम पावर है तो आप उसको बिगेस्ट भी कर सकते हो और स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो, सो दैट इज 2 power 2. 2 power 2, योर आंसर ऑफ HCF is 4. Already we have noted the answer of RHS, that is 12 into 20, 240. Now let's take LCM. Now in LCM, let me change the color so you can identify easily. Okay, now see, write down every number. It is 2 into 3 into 5. Okay, 2 power 2, biggest or smallest same. 3 power 1, 5 power 1. 5 power 1 is 5, 3 power 1 is 3. 5 3 is 15. 15 2 power 2 is 4. It is 60. Okay, now what is our HCF? 4. What is our LCM? 60. Multiply them together. Multiply them together. 60 into 4. Our answer is also 240. Our answer is also 240. So what is our answer? What is our answer of LCM and HCM? So our answer of LCM and HCF, it is 240. Now what is our answer of product of two numbers? That is also 240. So the formula is verified. आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा कि फॉर्मूला वेरीफाई करो, अदरवाइज चेक द फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, सो बेटर आइडिया we can get. Okay, 26 and 49. Now 26 and 49. 26 is nothing but it is 26 is 2 into 13. We already know what is 26. 26 is 2 into 13, matlab 2 power 1, 3 power 1. Okay, now what about 91? 91 is 7 power 1 and 13 power 1. Okay, now let's take their HCF and LCM. Okay, now HCF, let's take their HCF. Their HCF I will write directly. 2 power 1 नहीं है इसमें, 7 power 1 इसमें नहीं है, 13 power 1. So the answer is 13 power 1. So your answer of HCF is 13. Okay, now what about LCM? Let's write LCM. LCM is nothing but 2 power 1, 7 power 1 and 13 power 1. Now see, 13 7s are 91. 91 2s are 182. Okay, now
what is the multiplication? We are going to do the multiplication of HCF and LCM. Multiplication of HCF and LCM, that is 182 into 13. 182 into 13. Whenever you will multiply 182 into 13, your answer will be 2366. आप उसको पॉज करके शांति से देखिएगा, 2366. ओके, नाउ लेट्स चेक द, वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही होगा 91 इंटू 26 का. सो आर एच एस के लिए बात कर लेते हैं हम. नाउ व्हाट इज़ आर एच एस? सो आर एच एस के लिए बात कर ले तो डायरेक्ट हो जाएगा 26 इंटू 91, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लिए 2366. यू कैन मल्टीप्लाई इट इजीली, 2366. सो बोथ द साइड्स आर वेरीफाइड. गॉट इट? ये दो सम आपको देख लेना है, उसको वेरीफाई कर लेना है. उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ दो सम होमवर्क के लिए, और वो दो होमवर्क के लिए होगा 510. ये भी आपका एक होमवर्क रहेगा, तो आप उसको होमवर्क कर सकते हो. 510 इंटू 92 मल्टीपल करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ भी लेना है. सेकंड एक आपको मिलने वाला है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करिए उसका, बराबर है. फिर ये भी आपको एक होमवर्क में मिलने वाला है. ये दो सम आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करने, और आपका फीडबैक मुझे कंपलसरी देना है, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो शाम को आएगा, मैं शाम को एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.